गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी हमारी मेंस आंसर राइटिंग की। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जो थे वो मैं अपनी पिछली क्लासेस जो थी उसमें मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और क्योंकि जिन क्लासेस में मैंने ये क्वेश्चन जो है वो लिखवाए थे वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए क्लासेस थी और वो क्लासेस जो थी वो पब्लिक नहीं की गई, ठीक है। तो मैं इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दोबारा जो है वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो जो है उसको पॉज करके अपने आंसर जो है वो आप लिख लेना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैं आज लिखवाऊंगा। 3 क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, 2 क्वेश्चन जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो उसमें आपको लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज जिन 3 क्वेश्चन जो हमने आज लिखने हैं वो जिनके आंसर जो हमने आज फ्रेम करने हैं वो क्वेश्चन जो वो आप लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई इंडेंचर्ड लेबर was taken by British from India to other colonies. Question mark. How have they been able to preserve their cultural identity over there? Question mark 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एग्जामिन how the decline of traditional artisanal artisanal industry in colonial India crippled the rural economy 2017 का क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, क्लैरिफाई how mid 18th century India was beset with the specter of a fragmented policy 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब आप जो है वीडियो जो है इसको यहीं पे पॉज करके अपने आंसर जो है वो फ्रेम कर लो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जो है वो आपको 6 मिनट के अंदर जो है वो लिखना है, ठीक है। अपना टाइमर जो है उसके अकॉर्डिंग सेट करो और 6 मिनट में अपना आंसर जो है वो लिखो, ठीक है। तो बाकी बच्चे जो है वो अपना आंसर जो है लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले है इंट्रो लिखो अपनी। इंडेंचर्ड लेबर was a system of bonded labor that was instituted following the abolition of slavery throughout British Empire in 1833 as newly free men and women refused to work for low wages on sugar, tea plantations and rail construction projects in British colonies of West Indies, Fiji, Fiji, Mauritius, Mauritius and Ceylon, Ceylon, फुल स्टॉप। इसके आगे 4 बुलेट पॉइंट्स जो है वो आपके बनेंगे, ठीक है। क्योंकि नए बच्चे जो है उन्हें नहीं पता होगा, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है आपकी आंसर शीट जो है यूपीएससी की वो इस तरीके से आती है। यहाँ पे मार्जिन होता है, यहाँ पे मार्जिन होता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे यूपीएससी जो है वो लिखा होता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ठीक है।
उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको अपना आंसर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से लिखना जो है आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इंट्रो डाली अपनी, ठीक है, ये इंट्रो आपकी जा रही है, इंट्रो यहाँ पे आके खत्म हो गई, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपने बुलेट पॉइंट जो है वो बनाने हैं। अगर इसका कोई सब पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इसका फर्दर सब पॉइंट है तो यहाँ पे बनेगा, अगर सेकंड सब पॉइंट है तो यहाँ पे बनेगा, मेन पॉइंट अगेन यहाँ पे बनेगा। फिर जब पैरा चेंज बोलूं तो यहाँ पे आप पैरा जो है वो आप लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर पैरा चेंज कर दिया तो यहाँ से आपको दोबारा लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है इस तरीके से लिखना है। अब 4 आपके सब पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपने पैरा लिखा है ऐसे करके, यहाँ पे आपका पैरा खत्म हो गया। यहाँ से पहला सब पॉइंट बनाना स्टार्ट करो, देन दूसरा बनाना, तीसरा बनाना, चौथा बनाना, फिर यहाँ से नेक्स्ट पैरा दोबारा स्टार्ट कर देना, ठीक है। दोबारा सब पॉइंट आएंगे, ऐसे ऐसे सब पॉइंट बनाने हैं। इनके सब पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे सब पॉइंट बना देना, ठीक है। चलो, फर्स्ट, इन 19th century people were recruited as 19th century people were recruited as indentured labor, INDENTURED, indentured labor, indentured labor from foreign regions like Eastern Uttar Pradesh, comma Bihar, comma Central India, and dry districts of Tamil Nadu, as these regions experienced many changes such as second point बनाओ, such as decline of cottage industry, comma rising land rents, RENTS, and clearing of land for mines and plantations, full stop. Next point, all this affected lives of lives of poor as they failed to pay their rents and became RENTS, rents, and became deeply indebted, forcing them to migrate in search of work to escape poverty and famine, Last point, India's large population provided the British Empire with a steady source of workforce, full stop. Thus, comma, British exploited both the vulnerability, vulnerability and readily available large population, full stop. पैरा चेंज करो और लिखो once placed in British colonies, comma, festivals such as Muharram, comma, Holi, served as
placental link, PLACENTAL, placental link to preserve their cultural identity, placental link to preserve their cultural identity, full stop. अब इसके 6 सब पॉइंट्स जो है वो बनेंगे, वो बनाओ 6 पॉइंट्स। सबसे पहले इन ट्रिनिडाड, TRINIDAD, comma, the annual Muharram possession was transformed into Carnival Hosay, HOSAY, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, होसे, for Imam Hussain, HOSSIAN, Imam Hussain, drawing a large crowd, full stop. Next point, the protest religion of इसको कैपिटल में लिखना, ठीक है, RASTA, रस्ता फरायनिज्म, FA एक साथ ही है ये, FARIANISM, रस्ता फरायनिज्म, popularized by Bob Marley, reflects social and cultural links with Indian migrants to Caribbean, CARRIBEAN, Caribbean, full stop. Third point, chutney music, CHUTNEY, chutney music became popular in Trinidad, 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 full stop. Fourth point, Bollywood kept alive the cultural identity among indentured labor. Fifth point, a rigid caste system of Indian society melted as indentured people identified more with Indianness, INDIAN, Indianness, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखो Indianness, comma, promoting fraternal feeling, FATERNAL, fraternal feeling, full stop. Last point, initiatives such as No India program, KNOW, No India program, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, are conscious efforts by Government of India to ensure a continuum, CONTINWM, continuum of new generations with Indian ethos, ETHOS, full stop. पैरा चेंज करके कंक्लूजन लिखो. however के बाद हमेशा कॉमा लगता है, ठीक है. however, comma, the Sri Lankan 13th amendment to constitution is a reminder that the quest to preserve
the quest to preserve their cultural continues. To preserve their culture continues in some places. Full stop. By and large, comma, indentured labor have been able to retain their cultural heritage and renew their links with India, both as potent act of resistance and a powerful affirmation of their distinctness, distinctness. ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन था आपका, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल द रूरल इकोनॉमी। आंसर लिखो इसका, इंट्रो लिखो। व्हेन द ब्रिटिशर मत लिखो, व्हेन द ब्रिटिश took over traditional Indian artisans ruled the world and supplied about a quarter of all manufactured goods produced in the world, as famously quoted by Peter the Great, that commerce of India was the commerce of the world. Commerce of India was the commerce of the world. Commerce of India was the commerce of the world. इसको quote unquote में लिखो, full stop, para change लिखो। Nationalist economists proposed that with the beginning of British rule in mid 18th century, the process of deindustrialization started for the traditional artisanal 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 industry, full stop. The various reasons for that were लिखने के बाद कॉलन डाल दो, कॉलन। 5 पॉइंट्स बनेंगे आपके, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, the traditional artisanal industry lost its many patrons, 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 comma, like rulers, comma, zimidars, etc. After the coming of colonial rule, full stop. Next point, the colonial rule flooded Indian market
with cheaper manufactured goods. Colonial rule flooded Indian market with cheaper manufactured goods. cheaper manufactured goods के नीचे अंडरलाइन लगाओ. against which Indian handicrafts lost the competition. Full stop. Third point, the colonial rule also opened Indian markets with zero import tax. Zero import tax के नीचे भी अंडरलाइन लगाओ. which went in favor of British manufactured goods. Full stop. Moreover, जैसे however के बाद हमेशा कॉमा आता है, moreover के बाद भी हमेशा कॉमा आएगा. ठीक है, thus के बाद भी हमेशा कॉमा आएगा. Moreover, comma, Indian goods were severely restricted. Indian goods were severely restricted के नीचे भी अंडरलाइन लगाओ. In foreign markets, due to various regulations and taxes leading to loss of markets. फर्स्ट पॉइंट जो लिखा था ना उसमें पैट्रन्स, रूलर्स और जमींदार लिखा था, उनके नीचे भी अंडरलाइन लगाओ. फोर्थ पॉइंट लिखो, द आर्टिजन्स ऑल्सो सफर्ड at the hands of colonial power, colonial power, power, by having to agree to exploitative terms. Full stop. The English carried on the put out system of manufacture, where the artisan was supplied with the material, and the finished product was brought at a low price. Full stop. The English also procured raw cotton. From peasants, comma, at a low price, and sold it at exorbitant exorbitant rates to the artisans. Full stop. Thus, comma, the artisan suffered both as a buyer and a seller. Thus, the artisan suffered both as a buyer and a seller. ये लास्ट लाइन सारी अंडरलाइन लगा लो. Thus, the
artisan suffered both as a buyer and a seller. इस सारी को अंडरलाइन लगा लो. Last point, fifth point, with the advent of railways, railways के नीचे अंडरलाइन लगाओ. In the mid 19th century onwards, the process of deindustrialization was further fastened by colonial economic colonial economic and commercial penetration into the hinterlands of India. Full stop, para change, conclusion लिखो. This not only eroded the prosperous income base for millions of Indian artisans. This not only eroded the prosperous income base for millions of Indian artisans, but eroded the labor productivity of Indian architecture due to crowding and the twin pillars of traditional Indian rural economy were completely crumbled. CRUMBLED, crumbled. Full stop, para change. Thus, comma, in a short span of just 200 years, ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिख लो, 1757 to 1947. 1757 to 1947, the entire rural economy, which was self-sustained and prosperous for ages, prosperous for ages, was completely crippled. Last question है आज का. Clarify how mid 18th century India was beset with the specter of a fragmented policy. लिखो, intro लिखो. The first half of 18th century witnessed decline and disintegration of mighty Mughal Empire and rise of virtually independent regional powers. Full stop. Lack of strong central authority and emergence of regional power
weakened the political structure, weakened the political structure that led to rise of foreign power, rise of foreign power, full stop, para change. Factors that could be considered, para change करके लिखो, factors that could be considered to play potent role, in fragmented polity, वर के बाद कॉलन और ये हाइफन, वर 5 पॉइंट्स बनेंगे इसके, बनाओ। फर्स्ट पॉइंट, द मुगल सॉ a host of, sorry, the Mughal court, C-O-U-R-T, Mughal court saw a host of weak emperors in succession, comma, emperors who were incapable to command the glorious empire, and would rather indulge in wasteful extravagance, extravagance, of pomp, POMP, and show, SHOW, full stop. Courtrooms became kingmakers, apostrophe S, kingmakers, ground for treachery and war of succession became recurrent, 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 full stop. Next point, a number of powerful kingdoms such as Bengal, Awadh, Hyderabad, and Mysore arose and became virtually independent from the Mughal Empire, full stop. The weakened Mughal Empire was challenged by Marathas. The weakened Mughal Empire जो है ये next point में है, ठीक है। The weakened Mughal Empire was challenged by Marathas time and again, full stop. Marathas captured vast, V-A-S-T, vast swathes, S-W-A-T-H-E-S, of territory in North and Central India, full stop. Next point, the remaining illusion of continued domination of Mughal power was shattered by Nadir Shah's, NADIR SHAH apostrophe S, Nadir Shah's, ब्रैकेट में लिखो Shah of Persia, ब्रैकेट क्लोज,
invasion of India in 1739. लास्ट पॉइंट लिखो, अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली also made frequent inroads into Punjab and finally took over Delhi in 1756-57. Full stop. Marathas, comma, who were considered as only contender to fill the power vacuum in Delhi, comma, were defeated by Abdali's forces in the third battle of Panipat. Bracket में लिखो 1761. Full stop. The war didn't decide who will rule India, but who would not. Full stop. Para change, conclusion लिखो. After these series of events, the Mughal Empire ceased to exist as an all India empire in practice. Full stop. The British took advantage of the entire situation. Full stop. They defeated the forces of Bengal in Battle of Plassey, and finally combined forces of Bengal, Awadh and Mughals were crushed in Battle of Buxar. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं, जो अभी तक के सिलेबस में जो आपसे यूपीएससी में मेंस पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगा और उसके आंसर जो वो आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिक्टेट करवाए जाएंगे. ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.